the data, collecting the data, sending the data. Manan, your voice is not clear, beta. Anyone else who wants to read? Adnan wants to read, okay. Yes, Adnan. Start. Internet of Things comprises of two keywords, Internet and Thing. Internet, Internet interconnectivity for global connection. Things, embedded system devices, sensors, actuators, RFIDs, tags, QR code, and so many other things which are used for sensing the data, collecting the data, sending the data. Thus, on the whole, the Internet of Things is the technology which enables everything to communicate by themselves over the Internet through the device without the use of computers. Automation, the process of decreasing human intervention or involvement, thereby increasing the machine intelligence to perform any task by itself. IoT makes an intertwined network or artificial things like physical devices, vehicles, home appliances, and even to connect with natural living beings like plants, animals, and so on. Okay, so IoT. IoT stands for Internet of Thing, and this term is comprises of two words. First one is Internet, and next we have things. As we all know, Internet means connectivity, so that we can share information from one device to another device. Okay, and things, the devices we are using for sharing data, or we can say embedded system. So here in IoT we are using embedded system as a computer system. An embedded system is a dedicated computer system which is designed to perform specific tasks. So here thing is, why we are using IoT and on which basis IoT is working. So basically we have three functions which is performing by IoT device. First one is sensing the data. Next we have collection of data, or we can say collecting the data. And last we have data sharing, or we can say sending the data. So these are 3 points or 3 functions which are completed by IoT devices. So sensing the data is, one second beta. I can see Anshul here in this class. Please tell me your real name beta. Anshul. Your registered name in the school. Who is Anshul in this class? And from which section you are? Anshul. Jagrit, stop sending annotation request. One second. First tell me who is Anshul here. Anshul and Priya. Tell me your real name, beta. Okay, so if you don't want to tell, I will expel you. Join this class with your real name. Okay, so for IoT, we have two names, smart and automation. So all smart devices which we are using nowadays, like smart band, smart watches, smart home system, every automation system we are using nowadays in daily routine life or at home are example of IoT. And one more name we have this IoT is automation. As you all know, automation means automatically. So automation क्या है? Automation is a process in which everything is completing itself only without the help of human intervention. So automation is a process decreasing human intervention or involvement, thereby increasing the machine intelligence. Means जहाँ पे human beings की help कम हो रही है और everything is getting done by machine intelligence only. So our next chapter is artificial intelligence, that is also related to this chapter, artificial intelligence. So IoT is related to artificial intelligence and machine learning.
So this complete unit is related to each other. Without IoT, you cannot design AI. Without AI, you cannot fulfill this requirement of IoT. So IoT, AI, and ML. ML stands for machine learning. All these technologies are related to each other and all are dependent on machine intelligence. Okay. So next, who wants to read? Components of IoT. Who wants to read? Aman. Okay. Yes, Aman, continue. So next we have components of IoT. Yes, continue, Aman. Components of IoT. There are four main components used in IoT: low power embedded system. Low battery consumption, high performance are the inverse factors that play a significant role during the design of electronic systems. Cloud computing. Data collected through IoT devices is massive, and this data has to be stored on a reliable storage server. This is where cloud computing comes into play. The data is processed and learned, giving more room for us to discover where things like electrical faults, errors are within the system. Availability of big data. We know One that second, IoT Aman. relies heavily. One second, Aman. Bhavya Tawar. Bhavya from 8 Petunia. Is it correct? Yes, please confirm, Bhavya. Your last name is? I can see Bhavya Tawar. You are from 8th Petunia, right? Okay, Bhavya. Yes, continue, Aman. Availability of big data. We know that IoT relies heavily on sensors, especially real time, as these electronic devices are spread throughout every field. Their use is going to be trigger a massive flux of big data. Networking connection. In order to communicate, internet connectivity is a must, where each physical object is represented by an IP address. However, there are only a limited number of IP addresses available according to the IP naming system. Due to the growing number of devices, the naming system will not be feasible anymore. Therefore, researchers are looking for Alternative name. another alternative naming system to represent each physical object. Okay. So these are Information, big data. okay, continue. Big data are extremely large and sets that may be analyzed computationally to reveal patterns, trends, and associations, especially relating to human behavior and interactions. Interactions. Okay. So these are basic components that we are going to use in IoT, and we have to make sure these components are fulfill this requirement. So first we have low power embedded system. As I told you, embedded system is the basic thing. These are dedicated computer system which we have designed to perform specific task. जैसे कि आप वॉच डिजाइन कर सकते हो, वॉच का बेसिक पर्पस क्या है? आपको टाइम शो करना. अगर आपने होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाया, सपोज आपने अलेक्सा डिजाइन किया है, तो अलेक्सा का मेन पर्पस क्या है? वो आपका क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है जो आपसे इंस्ट्रक्शन लेता है और अपना काम करता है. तो जो भी हम एम्बेडेड सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप उसको क्या मेक श्योर है कि उसमें आपने जितने भी कंपोनेंट्स यूज किए हैं दैट शुड कंज्यूम लेस पावर. क्यों? क्योंकि अगर वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उन डिवाइसेस को आप स्मार्ट सिस्टम नहीं कहोगे, क्योंकि एवरी टाइम अगर आपको उस डिवाइस को पावर से प्लग करके रखना पड़ेगा, दैट इज नॉट योर स्मार्ट सिस्टम. स्मार्ट सिस्टम वो होते हैं जो हैंडी हो, मीन्स आप उसको कहीं भी कभी भी कैरी कर सको. और अगर उसमें बार बार आप बैटरी चार्ज ही करते रहोगे तो देर इज नो यूज ऑफ स्मार्ट सिस्टम. So whenever we are using smart system or designing IoT, we have to make sure all the devices or component are consuming less power. So this is the first component of IoT. Next we have cloud computing. तो जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पे रीड किया था, collecting the data. One second. This point. First one was sensing the data, and then we have collecting of data. Means जो भी सेंसर आपके इंफॉर्मेशन सेंस करेंगे. अब सेंसर का ऐसा कोई काम तो है नहीं कि वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए सेंस करेंगे. सेंसर्स का क्या काम होता है कि वो एवरी टाइम एवरी मिनट हर इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं?
फेच करते हैं, सेंस करते हैं और उनको स्टोर करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास रिसीव होगी वो क्या होगी, ह्यूज अमाउंट में होगी। अगर आपके पास स्टोरेज सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा तो वो डेटा हमारा कलेक्ट क्या होगा। तो जब भी हम एम्बेडेड सिस्टम आईओटी की बात करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास स्टोरेज सिस्टम क्या हो, ह्यूज अमाउंट में हो, और जहां भी आपने डेटा स्टोर किया है उस डेटा को आप कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सको। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको प्रोवाइड करती है बिग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एट एनी टाइम। सो नेक्स्ट वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स आप ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर रहे हो और एक ऐसे सेंट्रल लोकेशन पे डेटा को स्टोर करते हो जहां से आप उस इंफॉर्मेशन को कभी भी एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डेटा। अब बिग डेटा भी हमारा क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जो हमने इसमें क्लाउड में स्टोर किया। अवेलेबिलिटी मीन्स आपने यहाँ पे डेटा तो स्टोर कर दिया, तो हमको क्या मेक श्योर करना होता है कि वो डेटा हमें 24/7 क्या हो, अवेलेबल। ऐसा नहीं कि डेटा आपका सेंस हो रहा है, स्टोर है, लेकिन जब आपको उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सर्वर डाउन है या सिस्टम आपका खराब हो गया, तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी डेटा हमने स्टोर किया है दैट शुड बी एक्सेसिबल एनी टाइम एवरी टाइम। लास्ट वी हैव नेटवर्किंग कनेक्शन। So I can see two Rahul Prajapat in this class. Tell me your section name, beta. Rahul. Your father name? Rahul Prajapat. Two Rahul Prajapat here. Tell me your father name, both of you. Or this is the one person joining from two devices. Yes, Rahul Prajapat. Please answer, Rahul. Otherwise, I have to expel you. Yes, student. Is screen is clear or not? And Yuvraj, write your last name also. Your class and section. Yuvraj. Is this Yuvraj Singh? And students, please make sure you all are joining your classes on time. Every 5 minutes I am getting 10 or 5 requests for joining in class. Okay, so last we have networking connection. नेटवर्किंग कनेक्शन मीन्स जो भी आपने डेटा सेव किया, आप आईओटी का हम यूज क्यों करते हैं कि सेंसर हमारे डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम स्टोर करेंगे, जो हमें नोटिफिकेशन या डेटा हमें सेंड करना है दैट वी हैव टू सेंड। सो विदाउट दिस पॉइंट देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग आईओटी। सो दिस इज फॉर ऑल फॉर थिंग्स that are doing by devices and this is by internet. So these are some basic components of IoT. Any doubt anyone till here? Okay. So next we have building IoT. Next, who wants to read? Stop writing, beta. Why you keep on typing in chat box? Many students are saying I. Only one I can allow, na? Okay, Aryan, continue. Sharma. So we have Raghav Sharma in this class. This is 1 or 2? 8th Iris, Raghav Sharma 1 or 2? Write your father names, okay? Raghav Sharma. He is from Tulip. Now stop writing everyone your section name. Make sure whenever you are writing your names in WebEx, just write their section also. Okay? No need to write in chat box now. Yes, Aryan, you continue now. Aryan Kumar Meena, you want to read? Unmute yourself. Building IoT. There are two ways of building IoT. Form a separate internet network including only physical objects.
make the internet ever more expensive, but this require hardcore technologies such as rigorous cloud computing and rapid big data storage expensive. In the near future, IoT will become broader and more complex in terms of scope. It will change the world in terms of anytime, any place, anything in connectivity. Okay, so we can build IoT in two ways. First क्या है, you can use a separate network for each and every device, and next we can use a common network for all the device. So if we are going with this method, separate network, this will be cheaper one, but दिस वन विल नॉट एफिशिएंट, क्योंकि सपोज आपके पास 10 ऐसे कंपोनेंट है जो आप यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग आईओटी डिवाइसेस. अगर हर कंपोनेंट को आप डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइड करोगे तो जो आपके पास कॉमन इंफॉर्मेशन शेयर होने की मतलब सपोज आपके पास 100 डिवाइसेस है, राइट, एंड ईच डिवाइस इज यूजिंग अ सेपरेट नेटवर्क. सपोज आउट ऑफ 100 two devices are not in use, मीन्स वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो जो आपके पास एक्चुअल डेटा आना चाहिए था वो आपको रिसीव नहीं होगा. इन प्लेस ऑफ यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, अगर आप कॉमन नेटवर्क यूज करोगे दैट विल बी कॉस्टियर, ठीक है, एक्सपेंसिव होगा, बट इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, एफिशिएंट होगी, क्योंकि क्या होगा, सेम नेटवर्क आप यूज कर रहे हो और सेम इंफॉर्मेशन ही आपको रिसीव होगी, कोई डेटा के मिसमैचेस के चांसेस नहीं होंगे इफ यू विल गो विद द कॉमन नेटवर्क. Okay, so this is very simple. Basically we have two type of method for building IoT. Either we can go with the separate network. अगर आप कुछ ऐसा IoT device use कर रहे हो जो सिर्फ आपके personal use के लिए, then you can go with this separate network. But if we are designing any IoT devices which is for public use or where we are getting globally data, for that we have to use this common network. Next, characteristics of IoT. Who wants to read? Siddharth. Yes, Siddharth, continue. Siddharth, continue. Unmute yourself. Student, make sure you all are not sending anything in chat box, because right now 6 teachers from the schools are monitoring this class only. So whatever you are writing, everyone is reading here. Join this class for reading purpose only. Is it clear? You are not allowed to send even a single emojis. Accept request, Siddharth, I have sent you. Yes, ma'am. Characteristics of IoT. Massively scalable and efficient. IP-based addressing will no longer be suitable in the upcoming future. An abundance of physical object is present that does not use IP, so IoT is made possible. Devices typically consume less power when not in use. They should be automatically programmed to sleep. A device that is connected to another device right now may not be connected in other instant of time. Intermittent connectivity. IoT devices aren't always connected in order to save bandwidth and battery consumption. Devices will be powered off periodically when not in use. Otherwise, connections might turn unreliable and thus prove One to second, be Siddharth. insufficient. Ayush, why you have sent these messages in chat box? IU, what is this? You are here for reading or disturbing the class? I warned you, like many staff is watching this class only. Still you keep on sending messages in chat box. If you all keep on behaving like this, I will expel you right now. Billions of sensors, billions of smart systems, and millions of applications. Okay, so these are some characteristics of IoT. First one is massively scalable and efficient. क्या मतलब है इसका कि आप डेटा क्या कर रहे हो, बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन जो आउटपुट है वो स्टिल आपके पास क्या एप्रोप्रिएट आउटपुट आ रही है. डे बाय डे हर सेंसर एनी टाइम आपका क्या कर रहे हैं, डेटा क्या कर रहे हैं,
कलेक्ट कर रहे हैं, तो ह्यूज अमाउंट में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, बट जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो क्या है, स्केलेबल है और एफिशिएंट है, मींस जो आपको एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए आपको वो रिट्रीव हो रही है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT. नेक्स्ट वी हैव IP based addressing will no longer be suitable in upcoming feature. So right now we are using IP based addressing. So what is the meaning of this IP based addressing? As I told you, IoT is based on internet only. अब इंटरनेट से क्या, हम इंटरनेट क्यों यूज करते हैं, सो दैट वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन, सो दैट वी कैन सेंड डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो अगर आप कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करते हो तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए. सपोज इन रियल लाइफ अगर आपको कुछ आइटम सेंड करना है या कुरियर वाले आपके घर पे कुरियर सेंड करते हैं तो आपसे वो क्या पूछते हैं, डिलीवरी एड्रेस, राइट, कि उनको उस कुरियर को, उस पार्सल को कहाँ डिलीवर करना है. ऐसे ही अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे जब भी आप कोई ईमेल सेंड करते हो या कम्युनिकेशन करते हो, चैट करते हो, मैसेजेस सेंड करते हो वाया इंटरनेट, तो वहाँ पे इंटरनेट में भी हमारे लिए क्या जरूरी है, एड्रेस. ठीक है, तो ऐसे अगर हम इंटरनेट एड्रेस की बात करें, वी हैव two type of addressing in case of internet. Okay, one is our IP address, screen is clear to all of you? No, still not clear.